between the resistance R of a different length of the wire and the length L. Resistance can be found by the formula R equals to V upon I. ठीक है? Where V is the voltage and I is the current. This is the circuit diagram we are given right now. The student is provided with the different lengths of the wire of the same material. He uses the circuit shown in figure 1.1. बहुत easy सी बात है सर्किट्स ने कनेक्ट किया है and he has also connected another wire of different length between these two crocodile tips. Now the first question is state one property of the wire that must be the same for the students to make a fair comparison. सवाल ये है कि कौन सी प्रॉपर्टी वायर की सेम होनी चाहिए ताकि जब स्टूडेंट्स इन्वेस्टिगेशन करें तो एक फेयर कंपैरिजन हो. Who can answer this to me? Khansa, are you there with me? Can you hear me, Khansa? Khansa Suhail, can you ask this question to me? कि कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी चाहिए हमें बेसिकली कौन सी प्रॉपर्टी हमें वायर की सेम रखनी चाहिए ताकि जब हम लोग डिफरेंट वायर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करें तो हमारे पास एक फेयर रिजल्ट है. हम्म. ठीक है. एनीवन एल्स कैन आंसर? या गो अहेड. ओके रेजिस्टेंस. ओके बट एक्चुअली वी आर इन्वेस्टिगेटिंग द रेजिस्टेंस इटसेल्फ ना तो वो तो नहीं होगा इसका आंसर. कोई और प्रॉपर्टी? कंडक्टिविटी. व्हाट? कैन यू से इट अगेन? Okay, length of the wire, that can also be the answer, okay. But not particularly the length because basically length हम लोग different lengths रख रहे हैं ना. Question में property कहा हुआ है कि we are investigating resistance of different lengths of the wire. तो यहाँ पे जो चीज़ change करे वो length है. So that won't be the answer as well. What else can we keep the same? अच्छा मुझे एक बात बताएं कि wires की क्या thickness, diameter या cross sectional area क्या इनका same होता है? वायर्स की थिकनेस क्या सेम होती है? क्या हर तरह की वायर्स की थिकनेस सेम होती है? सो वायर्स की थिकनेस तो हमारे पास डिफर करती है. ठीक है. इफ यू रिमेंबर हम लोग ये टॉपिक पढ़ रहे थे. इफ यू हैवंट डन जस्ट लेट मी गिव यू गाइस अ ब्रश अप अबाउट इट. अगर वायर बहुत पतली है, थिन है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमने जो है दो रेजिस्टर्स सीरीज में कनेक्ट कर दिए. और हमें ये बात पता है कि जब दो रेजिस्टर सीरीज में कनेक्ट कर दिए जाते हैं तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है. ठीक है, यानी करंट को पास होने में प्रॉब्लम होगी. इट विल टेक टाइम. बट इफ द वायर इज थिक, अगर वायर थोड़ी मोटी है, इसका मतलब ये होगा, इट वुड मीन बेसिकली if the wire is thick, this would actually mean कि दो resistors हम लोगों ने parallel में connect कर दिए. That's actually the meaning of the wire being thick. ठीक है, तो हमें ये बात पता है कि जब दो रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट कर दिए जाते हैं सो द रेजिस्टिविटी टेंड्स टू बी डिक्रीजिंग और द इफेक्टिव रेजिस्टिविटी एक्चुअली डिक्रीजेस. सो मुझे बताया कि यहाँ पर हमारे पास जो आंसर है बेसिकली व्हाट वी कैन कीप द सेम इज बेसिकली टू हैव अ फेयर कंपैरिजन इज द थिकनेस और द डायमीटर और द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? किसी को कोई डाउट नहीं है यहाँ पर? सबको ये बात समझ में आ गई है? So there can be three answers: thickness, cross-sectional area, or basically the thinness also, or the diameter, any other word you can use. Now the next question is, you have to draw the voltmeter symbol connected to measure the voltage across the length of the wire. अब आपको इस डायग्राम में एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करना है इस वायर के आसपास ताकि आप इसकी वोल्टेज मेजर कर सकें. So can anyone tell me how we going to connect the voltmeter in this circuit? Parallel to what? Yes, parallel to the wire. So let's do that.
I'm just going to connect a voltmeter like this parallel to the length or the length of the wire. ठीक है? Just keep in mind कि ammeter already में यहाँ पे दिया हुआ है, but if in case you are asked to draw the ammeter and the voltmeter, always keep in mind that the ammeter is always connected in series in the circuit, whereas the voltmeter is always connected in parallel. ठीक है? I hope that's clear to you all. Now the next question is, name the piece of apparatus he uses to measure the length of the wire between the crocodile clips. अब कौन सा apparatus इस्तेमाल करे ताकि वो इस wire की length को measure कर सके? Yes guys, what apparatus can he use to measure the length of the wires between these two crocodile clips? Okay, that's correct. What else? Can you say it again? ओके रूलर हम लोग कह सकते हैं बट इसके लिए जो प्रॉपर वर्ड है वो बेसिकली मीटर रूल है ठीक है मीटर रूल बोल रहे हैं आप लोग या हाफ मीटर रूल बोल रहे हैं ठीक है दैट्स अ करेक्ट टर्मिनोलॉजी फॉर द apparatus then we can also use the measuring tape so this is actually your correct answer I hope you all you understand that measuring tape जी can you say it again जी पद्धति में आपको जो है वॉट मीटर ड्रॉ करना है वो भी अपने सर्किट डायग्राम के साथ ठीक है नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड okay let's check out our answers if we are going correct or wrong. So as far as our question is concerned, we have done it right. The first question answer is thickness, diameter or the cross-sectional area. फिर हम लोगों ने वॉटमीटर भी ड्रॉ कर लिया पैरेलल में and meter rule है और measuring tape और half meter rule that's right. And let's move forward. Okay. Now the next question is part 2. Figure 1.2 shows the ammeter and the voltmeter readings when the length L is equals to 40.0 centimeters. ये हमें रीडिंग शो कर रहे हैं एमीटर की और वॉल्टमीटर की जब हमने लेंथ कनेक्ट करी थी 40.0 सेंटीमीटर्स की बिटवीन द क्रोकोडाइल क्लिप्स सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस फर्स्ट इफ आई लुक ओवर हियर 100 और 200 के दरमियान हमारे पास यहाँ पे बेसिकली 4 डिविजन्स हैं सो ये ऑब्वियस ही बात है क्योंकि आप लोगों ने इतनी मेजरमेंट्स करनी है यू कैन डू दैट एज वेल इफ यू हैवंट गॉट द आइडिया अबाउट इट. So what you can do is basically, we know that this is going to be 20, 40, 60, 80 and 200. So 110, 100 and, sorry, 120, 140, 160, 80 and then 200. So we know that कि अगर कोई line इसके बीच में आ रही है, if I just zoom this a bit, we know that this is going to be 120. So इसकी अगर बीच में कोई अगर line आ रही है it says exactly in the center half of it so if I just take out half of it basically it's going to be 110 so our answer for this measurement will be 110 milliamps. Is it clear to you all that how you're going to read this? Sorry can I say it again आपकी आवाज clear मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई say it again अच्छा आप स्क्रीन क्लियर हुई है मेरी ओके can you all see my screen now?
Can you all see my screen? Everybody can see my screen now? Can you see my red spots moving around on the screen? Okay. So I was just telling you guys.